आई थिंक बांग्लादेश के साइड से जो आने वाले हैं, देर इज फर्स्टली वी हैव टू चेक and make the border crossings, as I said, because of the terrain, the riverine terrain, the forest and the underdeveloped area in some places are easy going, जहाँ से आ जाते हैं. So we have to first is to check on the front line itself, which would involve stronger presence using the technology as well as the human resource to check the people coming in. The second is that identify where so there are two dimensions. One is the external, second is the internal. External can be two ways. One is, the interest of the government or our ISI or other people into it, pushing the people so that they create a problem. जैसे कि डॉक्टर अशोक ने अभी बताया है कि if more people have come, resource तो आपके पास उतना ही है ना, हमारे पास रिसोर्स पूरा नहीं है. यू एड such a large number of people coming in, whether it is living, whether it is food, whether it is water, whether it is any kind of a thing. So resources are limited. So it can be, as we had discussed, it is the economic reason is one, a little better way of living, earning some money is another factor, and other one is a planned one, which to my mind, Bangladesh ki side say yes, they are pushing it, but they are not the so many people who can really cause grave damage to the security as it is in the western side, where it is planned by the military in conjunction with the ISI. So therefore we have to have the first line of check very strong. Secondly, check, we got to have how are they mixing, as I said, the demography, it is the ethnicity, it is the language, it is the culture, it is a religion which is accepting. In some places, if somebody comes from outside, the whole public will go against. बाहर के लोग आ गए. But here, nobody says. Because the closer one, people are merging, mixing, and thereafter, there are people inside our own country who take, because they are the easy labor available. You find that so many people who are coming in from Bangladesh are working in the metros in big cities. I mean, I recently had gone to Gurgaon and I went into a society and I asked, my son also lives there. So when we are looking for some help, the people who are available are mostly from Bangladesh. So therefore they have come all the way from there and got into our heartland. So we have, everybody is responsible for it. But the factors, as I said, economic, the motivation, religion, culture, and our own requirement. People just accept knowing that they are from so and so place. So it is a collective efforts, I think, by the civil administration, by a central government, by the police, by the int agencies, and we have to engage. Unfortunately, at the moment, we may not be in a very good terms in terms of negotiations and having a bilateral thing, but we had good relations in the past, and hopefully, when the efforts are on, we may be able to restore back the old bilateral mechanism, whereas something has to be found out to get these people back. Immigration, as you know, goes from country to country, from continent to continent, intra-country from state to state, and in state from city to city, and in city from one locality to another locality. The whole idea of that planned migration is to create a density of population of the same faith or the same linguistic group. So that turns out to be more like a ghetto and becomes a no-go zone. So we also in the country have a lot of no-go zones. So now coming back to Uttarakhand in the Garhwal and Kumaon region, we had two regiments, the Garhwal regiment and the Kumaon regiment and the ITBP. That is where the people are going. Now the jobs have come down. So the jobs have come down, the people from this place have migrated out for search of jobs, and they're working all over the place in India, in Bombay, Calcutta, even in Macau, Hong Kong. So there is a vacuum never occurs in any place. So this vacuum has been filled in by the Muslim community, which has come from maybe Saharanpur, Najibabad, or adjoining areas of UP, and they have sort of disturbed the tranquility of the hill state. So what do you have to say on that? We have a commission which is looking into the migration to हमारे स्कूल से है जो इसको. See, first factor is that once if my border population, does exodus due to other reasons that the living conditions are harsh, economic conditions are not good, so that's not good for the country.
जो जिसको हम पलायन बोलते हैं, जो बॉर्डर से हमारा पलायन हुआ है, चाहे हम मुंबई गए हो, चाहे कहीं गए हो, जॉब्स की सर्च में गए हैं, इजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ की सर्च में गए हैं, तो उससे देश की सिक्योरिटी तो वीक हो ही रही। क्योंकि बॉर्डर अगर किसी भी खाली बॉर्डर को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। मेरी पॉपुलेशन अपनी होगी तो दैट इज सो इजी फॉर अस, बट खाली को कब तक हम डिफेंड, कितनी फोर्स लगाएंगे? तो ये जो है, अगर और उसके ऊपर अगर उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट के लोग अगर जा करके कोई भी, आई नॉट टॉकिंग वन कम्युनिटी, अगर कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट वहाँ जा करके सेटल होता है तो वो तो डबल खतरा है, दोहरा खतरा है, तो वो नहीं अलाउ किया जा सकता। और मेरे विचार से अब उत्तराखंड टेक ऑफ कर चुका है डेवलपमेंट की ओर। टूरिज्म जो है ना, ऑल काइंड ऑफ टूरिज्म, विंटर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, तो वो स्टेज आएगी कि दोबारा जो है ना रिवर्स प्लान होगा, ठीक है, यस रिवर्स माइग्रेशन होगा, और उससे जो है वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। Unless we create some job opportunity apart from this, where the local people can stay there and work there and have a earning livelihood, I don't see why people would leave if they can have a comfortable life and earn money there. So some plans if the army ex-servicemen could do. There are plans from the government of India here for developing piggeries and fisheries, where the government is giving about 80% subsidy. So if the ITPP retired people or the army ex-servicemen, they were settled like the Buds and Israel on the 630-kilometer border with China, and these things were maybe it will settle some of the issues. Do you think so? I think I tend to agree what you're saying. I'll give out 2-3 examples. Firstly, as the terrain is difficult, the development and the infrastructure is not existing. Take the case, our Punjab border with Pakistan is heavily, built up, residential, commercial, population. As we go north, we cross Srinagar, we come to Jozila, Kargil area, and then on to Batalik and come to Ladakh side, eastern Ladakh, very, very sparse population. And incidentally, those who have read the 1999, when the first these people who came in, they were not detected by the army initially. It was one of the graziers, because that person was grazing the cattle. He reported there are some anjan log yahan par se aaye hue hain. So that is the impact when we do not have people in the border areas. Similar things is in Uttarakhand. As was brought out also, लोग वहाँ से पलायन करके बेटर अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज के लिए जा रहे हैं। और हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे ये हारसिल बॉर्डर आगे का एरिया, नीति माना के आगे के एरिया, एज वी गो टू कुमाऊं साइड वेयर नाउ दैट लिपू लेक तक जो रोड वगैरह बनी है, so I think the government has taken note of this, and there are number of schemes which are being planned by the central government, the state government, पर उसको अमल करने के लिए विल होनी चाहिए कि कैसे करके करना है। विल तो है, अभी वाइब्रेंट विलेजेस एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, जिसमें होम स्टे टू डेवलप, टूरिज्म, ट्रैकिंग। आई थिंक रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैड gone and I think about some 18-20 years or something, उससे पहले वहाँ पे ट्रैकिंग होती थी, he has inaugurated that. So these are the ways and means to have a footprint, whether temporary or permanent in this border area. Very, very essential, because आप कहाँ तक का देखेंगे उसके अंदर से। The same thing in our adversary in China. They are developing the infrastructure. They have people coming into closer Chumar, Zarsar, Demchok areas में they have got small settlements. And जो आप बताने के लिए कर रहे थे कि हमें ex servicemen को करना चाहिए, our western borders, Pakistan has got the ex servicemen settled in some of the localities. They are motivated, they have been given land and some facilities to settle there, because they are the best people to judge and assess as to what India is doing. So something of that sort, yes, if it works out, there has to be adequate incentive for people. There's some concept paper also, कि border areas के अंदर हम छोटे ex servicemen की टुकड़ियाँ रखें, they are like watch for us and inform. So ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ बहुत thick population है वहाँ भी problem है, और जहाँ पर कोई भी occupy नहीं कर रहा है वहाँ पर भी problem है, because in spite of all the thing, the military or the border guarding forces cannot be everywhere. So technology, surveillance, along with our people on ground
and the local population to the extent possible, as far and closer to the border, I think will be the answer to this. Last मैं जस्ट question. ऐड करूँगा इसमें थोड़ा सा। हमने उत्तराखंड पुलिस में एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे जवान को होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग अलाउड नहीं है। सो व्हाट आई डिड कि इतने जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं जितने भी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, वहाँ पे कोई इतना बड़ा चंपावत जहाँ कोई खतरा नहीं है कि भाई कोई अपने रिश्तेदार की हेल्प कर देगा, तो वी अलाउड होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग टू अवर जवान्स। उसका इतना बड़ा फायदा हुआ कि वो वहाँ जाके खुश रहने भी लगे और सेटल भी होने लगे, परमानेंट घर वहाँ बनाने लग गए। तो सेम एक्सपेरिमेंट कैन बी डन बाय डन विद आर्मी एंड आईटीबीपी। उन्होंने जिंदगी भर जो बॉर्डर पे सेवा की, उनको कुछ इंसेंटिव देंगे, कुछ न कुछ जॉब का, जैसे होम स्टेज वगैरह बनाने का, तो आई एम श्योर कि वो योजना काम करेगी, तो अच्छा रहेगा। रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा। यस। लास्ट 1 मिनट। जितना प्रेशर है बांग्लादेश से, जो प्रेशर आ रहा है, इट इज कमिंग ऑन द सेवन सिस्टर्स एंड ऑन दिस एरिया, एंड बाय डिजाइन रोहिंग्यास आर managing to get from Bangladesh right up to Jammu. So it is not, they are not going to Jammu for search of a job, they are being taken there and settled there. There are international forces also behind them, especially behind Rohingyas, because they are easily pliable towards terrorism, you know. So they become tools in their hand. On that last words from both of you, sir. This is what I would say. Rohingyas are, you know, they have been ousted from their homeland, kind of, from Myanmar. So they are easy targets for radicalization. So they are being radicalized by ISI. That's why they get into this trap. They were behind the Bodh Gaya attacks. Rohingyas were behind the Bodh Gaya attacks. So I would say कि ये एंटी नेशनल है पक्का, इसमें वो, और हमको हमारे क्या ना, वी आर ओवर डेमोक्रेटिक। बहुत जल्दी उनको सारे आई कार्ड वार्ड बन जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी भी जो देश के लिए खतरनाक है, मैं तो कहूँगा। मतलब और जो लोग इनके वोटिंग कार्ड बनाते हैं उनको भी सजा दी जानी चाहिए। रूल्स तो ठीक ही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी चेंज। यस यस। I think we have covered in fair amount of within the time the land borders, but I think it had come out in the morning session of the coastal security. That is another one. I mean, we should not. There are fortunately, the ADG had brought out as to what are the various measures there. Imagine the coastline, and so difficult to put. We are not having a planted demographic people coming from that side, but historically and earlier, if we see our Sri Lanka and us, we have the people of both sides of the Tamil origin there as well as here, and any of the things happening in Sri Lanka has an effect in our southern states. Anything happening in our southern state has an impact on Sri Lanka. So I think besides the land, we should not lower our guard into the coastal security and into the surveillance and the security of our islands, that is the Lakshadweep and Andaman group of islands which is there. So I think overall, I think we got a very good plan. All agencies, security forces, paramilitary forces, Navy, Air Force, Army, Customs, the Coastal Police, Coast Guard. I think then only we can secure our borders and the maritime boundaries. So I think we've run through. If there are any questions, we welcome. Yes, sir. सर अनुराग हूँ। बहुत डिटेल में आपने समझाया सर। जनरल साहब से मेरा सवाल है, पश्चिमी सीमा हमारी सुरक्षित हो गई है, चाइना की तरफ से घुसपैठ कम हो गई है। एक पॉइंट आया था अनुराग जी, बस मैं उसको और क्लियर कर दूं। जो बांग्लादेश लेने से मना करता है ना, मैं बीएसएफ में रह चुका हूँ, उस टाइम हम पुशबैक करते थे। तो अभी बीच में हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट थी तो हमने पुशबैक नहीं किया, क्योंकि उनसे हमारे 10 दूसरे, उन्होंने हमारे बहुत सारे टेररिस्ट जो है पकड़ा करके हमको दिए थे, ऐसे हसीना गवर्नमेंट ने। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली एंड अदरवाइज वी हैव टू फोर्सिबली पुश देम दैट। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जी सर, मैं सवाल आप ही से पूछ लेता हूँ। आप ये बंगाल बॉर्डर वाली बात बता रहे थे सर, मेरे दिमाग में एक सवाल है कि अभी हम समझते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर हमारा
सुरक्षित हो गया है, ज़्यादातर लोग समझ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ तैनात है। बांग्लादेश में दिक्कत क्या हो रही है कि वहाँ से घुसपैठ इतने आसानी से, जैसा कुलदीप सर बोल रहे थे कि जम्मू से लेकर आप कर्नाटका में भी पाएंगे कि वहाँ रोहिंग्या बैठे हुए हैं, और ये एक दिन में तो आया नहीं है, पक्का है कि इनके पीछे कोई साजिश थी। अगर पाकिस्तानी उनके साथ लगे हुए हैं तो हम फेल कहाँ हो रहे हैं? चाहे तो सेना कहाँ पीछे है या सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पीछे हैं सर? मैं आंसर करूंगा। मैं IGBS से पंजाब भी रहा हूँ और बंगाल भी रहा हूँ। तो पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पे है और बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ के दो कारण हैं। एक तो पूरी तरह फेंस्ड है, वो अच्छा प्रॉपरली फेंस्ड है, उसको ब्रीच करना आसान नहीं। दूसरा, वहाँ पे ब्रीच जब होता है, इलीगल इमिग्रेशन माइग्रेशन होता है या इलीगल इमिग्रेशन होता है, तो जवान बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान से आए साला गोली मारता है, ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ दुनिया भर का वो फ्रेंडली रिलेशन भी है बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो जवान को डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर हम यहाँ ऐसे मार देंगे तो ह्यूमन राइट के लोग खड़े हो जा रहे हैं आजकल जा करके। तो एक तो ये इशू है।